ऑल आज हम बेसिक सीएनएन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि बेसिक सीएनएन आर्किटेक्चर की ओवरऑल पाइपलाइन कैसे होती है, कैसे एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा पास होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक बेसिक सीएनएन आर्किटेक्चर, एक सीएनएन आर्किटेक्चर बेसिकली किस लिए यूज होता है? इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। एएनएन, अनलाइक एएनएन वी यूज सीएनएन फॉर इमेज प्रोसेसिंग। सो इसमें जो हमारी इमेज होती है वो आरजीबी इमेज, लेट्स से वी आर प्रोसेसिंग ऑन द कलर इमेज। सो इसमें 3 चैनल्स होंगे आरजीबी। लेट्स एज्यूम कि इसमें 32 बिट इमेज है, तो 32 क्रॉस 32 इंटू 3, दिस विल बी द साइज ऑफ आवर इमेज। एंड then this image is passed through the convolution layer that is having filters or kernels. So number of filters can vary, any number of filters can be used depending on the problem. So let's say because यहाँ पे 3 channels हैं RGB, so we are using 3 sets of filters in the convolution layer 1. सो आफ्टर अप्लाइंग कॉन्वोल्यूशन, बेसिकली कॉन्वोल्यूशन क्या है कि यहाँ पे जो अभी आपने फीचर जो भी आपने फिल्टर्स लगाए हैं या जिनको हम कर्नल्स कहते हैं, और यहाँ पे जो हमारी आरजीबी में जो ईच चैनल के लिए जो हमारे पिक्सल की वैल्यूज है, इन दोनों का बीच का डॉट प्रोडक्ट है। तो इससे आपको एक यहाँ पे फीचर मैप मिलता है जिसमें दिस फीचर मैप विल ऑल्सो हैव 3 चैनल्स एज दे आर 3 फिल्टर्स। इसके बाद जो है कि अब यहाँ पे हम इस पे एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, ताकि लाइक लेट्स से कि वैल्यू, जिससे कि जो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने से हमें वैल्यूज़ मिली है, मे बी उसमें हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यूज़ है देन हम उनको 0 पे ले आते हैं। रेलू में यही होता है। रेलू क्या फंक्शन है कि नेगेटिव वैल्यूज आर मैप टू 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर मैप टू द मैक्सिमम वैल्यू दैट आर करंटली इन दैट डेटा सेट। सो यहाँ पे आपने एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया एंड देन वी पास दिस डेटा थ्रू ए पूलिंग लेयर। सो वंस आप इसको पूलिंग लेयर से पास कर, देन यू विल गेट सम टेंसर्स। सो this so this is one set of pooling and convolution layer set. You can use any number of pooling and convolution set based on your problem. After this the final output is tensor, and then you pass it to flatten this tensor. So it is in 3D, you need to make it in 1D. Then this 1D tensor is passed through a fully connected layer. So this fully connected layer is placed just like in ANN, and this 1D is passed through this 1D data is passed through the fully connected layer. Any number of fully connected layer can be introduced. In last, there is a output layer, this one. If you are doing a binary classification here, if you are doing then you will be using sigmoid. We do it through single node. And if you are doing a multi-class classification problem, you use softmax along with multiple, here you will with the multiple nodes. So this is the most common CNN architecture, and in this people do some changes and make new architectures. So what changes people do try, like if they change the number of convolution layer, then you will get a different architecture. Similarly, change the number of filters, stride value, padding is there or not, how many nodes are there in a fully connected layer, how many number of fully connected layers are there, and which activation functions are used, are you using dropout or not, batch normalization is there or not. So you get the idea. By changing the basic components or basic concepts in the CNN, we can get a different CNN architecture. All right. So over the years, since ImageNet competition is ongoing, where complex image classification has to be done, and normally researchers bring their CNN model. So over the years, different CNN architectures has been developed. First was LeNet. I will write down here. The first architecture developed was LeNet, then LXNet, and then VGG, then GoogleNet, Google LeNet, then VGG Net, then ResNet, and so on.
So I think you got the idea. So this is the basic CNN architecture. ये just मैंने I have given you an overview, and from the next lectures we will be deep diving inside each of the components. Thank you for watching. Please do subscribe.